Good evening, everyone. This is my first video I'm trying out. Actually, ये वीडियो मुझे लगा करने को द रीजन बिहाइंड इट इज कि just yesterday we have received a letter from Government of India in name of Rajesh Bhushan, who is a secretary of Department of Health and Family Welfare. तो इस लेटर में अभी एवरीवन नोज कि 2.5 years से कोविड जो शुरू है और उसके रिलेटेड जो कुछ भी गवर्नमेंट एडवाइजरी ने प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइंस दिए सबको फॉलो करने के लिए, तो दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन their one protocol which they call it as five-fold strategy. तो आज का वीडियो एक्चुअली आई वांट टू डू दिस ऑन दिस फाइव-फोल्ड स्ट्रैटेजी इटसेल्फ, क्योंकि मुझे तभी भी ऐसा लगा था और आज भी मुझे वही लग रहा है कि अगेन दे आर डूइंग द सेम मिस्टेक विच दे हैव डन इट अर्लियर ऑल्सो इन 2020 से लेके last year also it was repeated, and again yesterday's advisory is asking everybody of us to do the same thing. तो इनका 5-fold strategy जो है that is test, track, treat, vaccination and adherence to COVID appropriate behavior. यानी क्या कि पहले टेस्टिंग करो, उसके बाद ट्रैकिंग करो, उसके बाद ट्रीट करो, द 3 T's, and vaccination is the fourth strategy which is preventive as per them, and fifth what they say is everybody to adhere COVID appropriate behavior. Okay, तो आज मैं मुझे मेरे व्यूज जो मुझे लगते हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में वो मैं शेयर करने वाली हूँ. Few might of you will agree, some will criticize what I'm thinking, but actually the video is basically for that views should go across. As a homeopathic doctor, मैं मेरे views I would like to share today. अभी भी उन लोगों ने यही कहा है कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो जून मंथ में 2022 में दिए गए हैं वही फॉलो करने को कहा गया है फिर से. एंड थर्ड पॉइंट, एज पर देयर लेटर व्हाट दे आर सेइंग इज सडन जो राइज ऑफ केसेस है कोविड के बारे में इन जापान, यूएसए, उन्होंने बोला है कोरिया, ब्राजील एंड चाइना. तो इसके बारे में भी देखेंगे कि why they are going behind genomic sequencing and all. And on this basis, they have advised all states, health ministers, to again go through this 5-fold strategy. And they have asked to do genome sequencing again in different states and union territories and send it to IGSL, that is INSACOG genome sequencing laboratories को भेजने का एडवाइस दिया गया है. Now we will see how these 5-fold strategy जो है वो मुझे मेरे व्यू क्या है कि जो मुझे ये 5-fold स्ट्रैटेजी में कहाँ गलती लगती है वो आई एम गोइंग टू शेयर. दीज आर माय पर्सनल व्यूज. द फर्स्ट वन व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज टेस्टिंग. ओके, सो नाउ आई थिंक हम में से बहुत जनों को अब तक तो ये मालूम ही हुआ है कि RT-PCR टेस्ट
since 2 years has been used as a diagnostic tool or test. But we also know now, and it is proven, it has been said that this RT-PCR test kit जो थे और RT-PCR test itself, ये कभी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी. तो it was used as, actually it was made to be used as a research tool. रिसर्च के लिए, रिसर्च यानी जो अभी तक कोई भी चीज का कंक्लूजन नहीं निकला है वो रिसर्च होता है, बिकॉज इट्स फाइनली अ सर्च दैट वी आर डूइंग. लेकिन फिर भी ये आरटीपीसीआर टेस्ट 2 साल से यूज की गई है, अभी भी एडवाइजरी वही है. तो इसमें डायग्नोस्टिक फ्लॉज क्या है? तो देयर आर 2 थिंग्स. One is the positivity and the negativity. Abhi, when a case turns out to be positive, okay, तो क्या हुआ कि फॉल्स पॉजिटिविटी का भी चांसेस बहुत रहता है. फॉल्स पॉजिटिविटी यानी क्या कि अगर मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, आई एम असिम्प्टोमेटिक, और इवन इफ आई एम सिम्प्टोमेटिक एंड आई गो टू डू एन आरटीपीसीआर टेस्ट, then it turns out to be positive. Okay. Sometimes it also occurs कि मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं टेस्ट करने जाऊं and the test turns out positive. So इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पॉजिटिव केसेस हैं ये इतने एग्जैगरेट किए गए, क्योंकि क्या किया, किसी को भी माइल्ड सिम्टम्स हो, सर्दी खांसी जुकाम, इट वॉज एडवाइज्ड कि हर एक जन को टेस्टिंग करनी है. सो डिपेंडिंग ऑन द सीटी वैल्यूज, क्या हुआ कि साइकिल्स ऐसे थ्रेशहोल्ड पे लाके रुकाए गए कि मैक्सिमम टाइम्स अगर 100 टेस्ट किए तो उसमें से 90% तो पॉजिटिव ही आएंगे. That was the problem with this. So what happened was कि maximum patients जो भी टेस्ट कर रहे थे, they turned out to be positive, but they were actually not infected. So they were termed as false positive है ये तो. फिर भी ये exaggerated numbers create हुए because of false positive. तो उससे क्या हुआ कि मीडिया में सब जगह व्हाट केम अप वाज कि इतने पॉजिटिव हो गए. सो व्हाट हैपेंस इज दैट क्रिएट्स अननेसेसरी फियर एंड पैनिक अमंग पीपल. नाउ अनदर पॉइंट वाज कि फॉल्स निगेटिव जो है उसका भी एक प्रॉब्लम था. सी वी हैव heard, many of you must have heard stories coming out कि हमको ट्रैवल करने के लिए जाना था, हमको किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए जाना था, इसलिए हमने टेस्ट करवाई, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सर्टन यूज ऑफ माल प्रैक्टिस हमने नेगेटिव रिपोर्ट ले ली. Now, how that is done, we don't know, because corruption takes place in all places. तो इसकी वजह से false positive as well as false negative, ये दोनों numbers were incorrect. They were not as per actuals. कि अगर positive है तो सचमुच person is infected, ऐसा बहुत कम है. तो बिकॉज ऑफ दिस इनकरेक्ट डेटा के बलबूते पे बोलना कि ये पैंडेमिक है बिकॉज वी हैव सो मच पॉजिटिव केसेस अराउंड, ये सबसे बड़ी गलती थी.
अभी इफ यू टॉक अबाउट डेटा, करंटली जो इन लोगों ने बोला है कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज में स्पेसिफिकली अगर हमने वर्ल्डोमीटर जो है वो साइट पे जाके देखा, तो यू विल सी कि चाइना का स्पेसिफिकली अगर देखा तो 15 December to 18 December actually there were no deaths if you see the table. 19th December and 20th December को single digit deaths दिखाए जा रहे हैं, 2 and 4 deaths. But on social media so much news is there that hundreds of deaths have occurred. COVID wave has arrived, and many of the researchers and scientists are also predicting that by Jan or Feb, there will be, I don't know how much thousands of deaths occurring in China. So now there is discrepancy between this data being shown on Worldometer and the actual numbers. So what happens is this number becomes so important, and one should think that on what basis, we should conclude this to be health crisis. Because if the basic recorded numbers is only incorrect, then the whole structure of this pandemic turns out to be falsely propagated. So this is very important to note, that why we should not depend much on the number of cases turning out to be positive after testing. So for that, what needs to be done can be thought of, why you need to test each and every patient. So while doing this, what one should see is severe cases, like, there is patient coming to you with severe respiratory distress syndrome, or severe respiratory infection, and then the family physician or the doctor, after his own protocol of treatment, and can suggest the patient to go and do the test. So this itself is going to decrease the case positivity. That is first thing. Now what happens because of this positivity, what these people do is they go on tracking behind these positive cases, that okay, if you are positive, then who are the people that you came in to contact with. So again, they test those people. So what happens is you keep on increasing the number of tests being done, and the test itself has diagnostic flaws, which is going to provide you no actual positive case numbers at all. So mass testing is also should not be recommended. That is what I feel. Now, depending on these, again, positive COVID cases and numbers, which even comes out in media as well as government routinely tells you through their press releases, what happens next? Protocols are designed and they are advised to be implemented. Now, what kind of protocols? So first thing that started was the lockdown. Isolation. If you are positive, you isolate yourself. And the funny part is when you ask somebody to isolate, it is never patient centric. What it was done in 2020 was, again, building में अगर एक भी patient COVID positive रहा, तो complete building was sealed. If you get 10 cases in a society, the whole society was sealed. So that disrupts, complete
um, what you say, living structure of that residential area or whatever institute that is going under it. Again comes about the school. If you get so and so cases, schools are closed. So almost a year and more children never went to school only. So all this, my point is that all these guidelines, suggestions, protocols, they are based on the test number. And again, I'm repeating, these test numbers itself are incorrect. They are not at actuals. They are exaggerated numbers. They have false positivity in them. They have false negative cases also. So these numbers cannot be taken at face value to implement such harsh rules like lockdowns and isolation and protocols. Okay, because that is going to disrupt life of healthy individuals also, as well as it's going to affect low socioeconomic people who are not able to move around, who depend, whose bread and butter depends on daily wages and they go out daily to work. So these things are not going to help in the long run. Now, initially, when this all started, first 6 months, 8 months, it was fine because it was quite new to even all doctors. See, any new illness or disease coming up needs time to, understand. So that window period is fine. But now, even after it went on for second year, and now we are almost entering into third year, again, we are trying to go through the same uh, protocols and guidelines, which is not correct completely. So it needs to be given a thought about this testing, this tracking. Then comes the third T of them, that is treatment. Now this was another kind of story, because see, in last 2 years we have seen, which everybody will agree to, that there has not been specific treatment for COVID. Why I'm saying specific? Because finally, except for when a severe case went for hospitalization, except for toxic drugs like remdesivir, as well as oxygen supplementation, and maybe some more basic antivirals or something, supplement usage. Apart from this, not much was of help. And that too, this treatment was being done only on patients who were getting hospitalized. And सबसे बड़ी बात क्या है कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हॉस्पिटल में गए ही क्यों, तो उसका भी एक फ्लॉ है. दैट वाज डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन योर SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन. सबके घर में पल्स ऑक्स थे, सब लोगों ने पल्स ऑक्स घर में लेके दे यूज्ड टू ट्रैक. कॉमन पर्सन आल्सो नाउ नोज ऑन द स्ट्रीट, इफ यू आस्क, दैट अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर फिंगर पे लगा के आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 94 के नीचे आया, 93, 92, people get panicky, and there are instances which are there, that people have themselves gone and admitted themselves into hospitals just with the fear that my SpO2 has gone down to 92 or 93. Now, again, there is a problem in this. See, fear, there is a term in medical field called as psychosomatic diseases. Many people, many doctors will not believe to what I'm saying, but there has been research going on wherein it has been concluded that how your psychological
thoughts, affect your physical stature. So इतना डर था लोगों के बीच में कि बिकॉज ऑफ दिस फियर आपका पल्स रेट बढ़ता है, आपको स्वेटिंग होता है, आपको ब्रेथलेसनेस लगता है. ये सब होने के बाद अगर आपका पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 94, 93, 92 आ भी गया तो भी there was no need of getting hospitalized. But these symptoms, were always taken कि नहीं, you are COVID only, my test is going to get positive. और वैसे भी टेस्ट करने गए तो वो पॉजिटिव ही आने वाली थी because of the flaw behind that test. तो क्या हुआ? People started going to hospitals. There were few cases which were genuinely maybe having some severe respiratory illness or something, which could have been a complication of a normal viral illness, which we call influenza. On what basis this was being differentiated? Again, that is a question. How RT-PCR test can differentiate? My question is that how RT-PCR test can differentiate a yearly or seasonal influenza which has got complicated. So difference between this and difference between being COVID positive. RT-PCR test cannot detect or give you this difference. So then my question is, why can't we say that many of the hospitalized cases which we seem to be genuinely COVID positive are not complications because of this coronavirus or COVID? So again, there is a number game. Again, the number game here is that COVID positive cases or the X number of COVID positive case could have been complications which arised in normal viral influenza for a person. It could have been. So again, this is a huge, gap between these numbers, projection of numbers. Then another thing was that patients this is very bad that has happened is that only allopathy doctors were allowed to take COVID cases, and that too I'm telling not for treatment but to just ask them to do the test, and then they were outed to hospitals. What about doctors like me who come from different medical science, who have been treating patients, Ayurvedic doctors, homeopathy doctors, there are naturopathy healers, यूनानी डॉक्टर्स, इन लोगों के पास कोविड केसेस जाने ही नहीं दिए. अगेन यहां पे भी नंबर गेम है. मैं क्यों नंबर गेम बोल रही हूं? क्योंकि इफ व्हाट रॉन्ग इज देयर इफ आई से दैट अगर हम लोगों के पास एक सिक इल पेशेंट आता था and if our medicines would have worked for them, if a situation would have arisen that they would not have been led to a condition wherein need for hospitalization would have arisen. तो ये तो subtract ही किया गया ना. So what was happening was कि पेशेंट बेस हेल्थ क्राइसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? हेल्थ क्राइसिस अगर आए तो वी नीड मैक्सिमम सोर्स ऑफ मेडिकल हेल्प.
and maximum source of medical help come from doctors itself. So whether it is MBBS, whether it is homeopath, whether it is Ayurved, so solution here should have been कि आप रिस्ट्रिक्ट मत करो पेशेंट्स को अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाने को. Let them go. Let the doctors decide whether this patient I'm able to handle or not, whether I'm able to treat or not, whether this patient really needs hospitalization or not, because that patient, when comes to me, I know how to deal with it. But अगर आपने पेशेंट को जाने ही नहीं दिया और रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया डॉक्टर्स को केसेस लेने के लिए, and then route them to do this unscientific RT-PCR test and then create huge numbers, तो इसमें क्या बड़ी बात है? This is incorrect. So this again is here a number game, क्योंकि ये नंबर कम होते थे अगर इमीडिएट अर्ली ट्रीटमेंट फ्रॉम बेसिक लोकल डॉक्टर्स अगर मिलता था, तो ये कोविड हॉस्पिटलाइजेशंस कम होते थे. बर्डन गवर्नमेंट पर हेल्थ मिनिस्ट्री का कम होता था. देयर वुड हैव बीन लेस केसेस टू बी टेस्टेड इटसेल्फ, एंड मे बी हु नोज द पैंडेमिक would not have had that kind of picture what we have been shown today. So this is another thing about treatment. होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, सब में अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है फॉर ऑल दीज बेसिक सिम्टम्स कि जो पूरे 2 साल में कोविड पॉजिटिव केसेस में पाए गए. कोविड पॉजिटिव केसेस में ज्यादातर, mostly if you see the majority of COVID cases, they were always mild to moderate variety only, which could have been easily dealt with by normal local physicians and medical practitioners or family physician, कि जहां पेशेंट हरदम किसी भी चीज की बीमारी के लिए अपने डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन ये हुआ ही नहीं है. Okay, fine. Next comes what is vaccinations. वैक्सीनेशंस का मैं यहां एक बोलूंगी कि मास वैक्सीनेशन कहां गया. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि अगर आप एक प्रोटोकॉल या गाइडलाइन देते हैं, नाउ मास वैक्सीनेशन क्यों बोला गया? बिकॉज दे बिलीव कि सिंस इट इज कम्युनिकेबल डिजीज, अगर मैं बच जाती हूं कोविड से तो मेरे से दूसरा भी अफेक्ट नहीं होगा. दिस वॉज देयर थॉट बिहाइंड डूइंग मास वैक्सीनेशंस. बट द प्रॉब्लम हियर इज इंडियन पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो इट इज इनटू क्रोर्स, राइट? एंड दिस वैक्सीन कोविशील्ड जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन में इंडिया से दिया गया, तो दिस वाज ऑलवेज अंडर इमरजेंसी यूज. इफ टुडे आल्सो यू गो टू सीरम इंस्टीट्यूट वेबसाइट, it is clearly mentioned that Covishield is to be given under, it is a vaccine under emergency use. अभी emergency है क्या, तभी थी क्या, that is a different thing. Emergency दिखाई गई by projecting so big numbers of COVID. So again these vaccines were given on that wrong number data. So vaccines देने के बाद first of all these trials जो हुए vaccines के, उसके लिए भी जो जिन पे ट्रायल हुआ, that number is always very small as compared to total population. ये vaccines 1+ करोड़ पॉपुलेशन अगर है, तो कोई भी नई चीज अगर लाई जाती है तो उसका जो ट्रायल है वो
बहुत लोगों के ऊपर मास स्केल पे होना चाहिए था बिफोर लेबलिंग इट एज अ सेफ वैक्सीन। फिर भी अगर ये इंप्लीमेंट किया गया फॉर 1 मिनट, लेट्स से कि ओके इट हैज गॉट इंप्लीमेंटेड, नेक्स्ट थिंग केम was about the mandates. Now there were so many people कि जिनको वैक्सीन लेना नहीं था, but they were indirectly forced to take these vaccines. और वो कैसा फोर्स किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि वैक्सीन्स आर नॉट मैंडेटरी, दे आर वॉलंटरी. Vaccines actually, theoretically, academically, they can never be mandated. But central government ने ये बोला कि they are not mandatory, they are voluntary. But what they did was they in the background, what they did, they suggested the states, to take decisions for their union territories and states. The decisions were left on to them. तो इससे क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि ये वॉलंटरी है, सो ऑन पेपर दे आर सेफ. स्टेट गवर्नमेंट ने उसको मैंडेट किया, आप ऑफिस प्रेमाइसेस नहीं जा सकते अगर वैक्सीन नहीं है, आप मॉल नहीं जा सकते अगर वैक्सीन नहीं है, आप कॉलेज नहीं अटेंड कर सकते वैक्सीन नहीं है, एग्जाम नहीं बैठ सकते वैक्सीन नहीं है, सो ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट वैक्सीनेटेड. तो इसकी वजह से लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेट किया जबरदस्ती. नाउ इफ देर आर फ्यू पीपल कि जो उन्होंने they raised their voice and they said कि no, we don't want to get vaccinated because it's my body, my choice. लेकिन तभी स्टेट गवर्नमेंट का जवाब क्या था? उन लोगों ने ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल दिया, बोल के कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हमें ऐसी एडवाइजरी दी है कि आपके स्टेट की हालत देख के आप अपना डिसीजन खुद लीजिए. So they made themselves again safe. Central government made themselves safe by saying that it is voluntary. State government made themselves safe by saying कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब डिसीजन हम पे छोड़ा है, हमारे स्टेट में इतने इतने पॉजिटिव केसेस है, इसलिए आपको वैक्सीनेट करना जरूरी है, राइट? तो ये दिस, if you are able to understand what I'm saying, the problem lies in putting one thing on another's head. फिर क्या हुआ? Next thing what happened was, okay fine, people got vaccinated. What about adverse events? कितने लोगों को वैक्सीन देने के बाद तकलीफ हुई? इसका रिकॉर्डेड डेटा कहां पे है? अगर आप सीरम इंस्टीट्यूट के पेज पे जाओगे तो वहां पे अभी भी यू विल सी, आई थिंक यूएसए, स्वीडन, आई हैव टू सी, बट देयर आर ओनली 2-3 कंट्रीज का उन्होंने एफिकेसी दिया है कि कितना एफिकेसी से एस्ट्राजेनेका काम किया है, क्योंकि कोविशील्ड इज बेस्ड ऑन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन. यानी इंडिया को वैक्सीनेट करने के बाद की एफिकेसी भी उन लोगों ने वेबसाइट पे नहीं डाली है. दैट इज वेरी स्ट्रेंज. नाउ व्हाट हैपेंस? कितने लोगों को वैक्सीनेशन से इमीडिएट डेथ हुई है? उसका अपना इंडिया के पास रोबस्ट वैक्सीन सर्विलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए वी डोंट हैव दैट करेक्ट डेटा विद अस.
Though government says ki yes, we have data, but there are certain outside groups who have a huge larger data than what currently government has with them. Many of the data has been passed on through mails to Prime Minister's office also, which common person is not aware about. There were cases being fought in Supreme Court, in High Court, and in other district courts regarding these vaccine adverse